ठीक, where were we? तो EMF मिल गया हमें, d5/dt से EMF मिल जाएगा. Resistance 302 ohms, I is equal to E by R, 10 power minus 4 upon 2, which is 0.5 10 to power minus 4 amperes. Current भी है हमारे पास. Power dissipated पूछा उन्होंने, power is equal to VI. Right, power dissipated will be equal to VI or I square R. Right, you can go with anything. In this case, I'll go with VI because direct formula हो गया 0.5 10 to power minus 8. ठीक है, वहाँ पावर कुछ आने से वाट आ जाएगा. समझ आए ना? Yes or no? Simple, not much difficult. Direct steps again. We just had to solve it and you'll get the answer. ठीक है? ठीक है सर, कोई if there are no units of B initial नहीं है, बस खत्म. That's it, right? दिया है तो दिया उन्होंने, क्या मतलब है? Now look at question number 6. 6, right? Yeah, try doing question number 6. Tomorrow you have bio test. वापस bio test कहाँ से आ गया? कौन सा bio test? अवंती दे देना दोनों. Or else whenever you find time, give it tomorrow or day after tomorrow. Unlock it tomorrow, you can give it tomorrow or day after tomorrow. ठीक है? Try to give it tomorrow. That would be better. Okay. Let's go into question number 6. क्या दिया उन्होंने? A rectangular loop of length L, breadth B. Let me make use of the marker here. Length L, breadth B is placed at a distance of x from an infinitely long current carrying wire, a long wire carrying current I, such that the direction of current is parallel to the breadth of the loop. ठीक है? If the loop moves away from the current wire in a direction perpendicular to it with a magnitude of velocity v, loop is moving away from the current wire in a direction perpendicular to it with a magnitude of velocity v. Now what would the magnitude of the EMF induced in the loop be? Have to calculate the EMF. ठीक है? हम देखो. So we got this. Let's suppose this is a loop. ठीक है? अब ये देखो, and let's suppose this is a wire. It's carrying a current I. उन्होंने बोला parallel to the breadth of the loop, so this is B. This is length L. Let me call it this. Let me call this rectangular loop as A, B, C, D. Now, मुझे बताओ, in AB, will there be any EMF induced? In AB, what will the EMF induced be? बता दो. In AB, what will the EMF induced be? क्या होगा?
In AB, what will the EMF induced be? A simple direct question. It will be zero. Zero क्यों होगा? देखो, if I look at AB itself, AB का length जो है, it's in this way. Question में क्या बोला उन्होंने? The loop is moving away. मतलब इस केस में राइट की तरफ मान लो. तो V is along the length. ठीक है? So when I take the component of velocity perpendicular to length, वो क्या होगा? Zero हो जाएगा. Or you can take the component of length perpendicular to velocity. What will it be? Zero. Yes. समझ पा रहे ना? So the same happens with CD also. You can take AB or you can take CD. दोनों में क्या होगा? The EMF induced will be zero. Right? समझ आ रहे ना? In AB and CD, EMF induced is zero. तो कोई मतलब नहीं है इसको. Clear? पहले ये पॉइंट समझ पाए ना सबको? अब देखो, ये देखो इन्होंने क्या बोला. कोई लगा दी क्वेश्चन है जहां पे मैंने सर्कल किया. It is placed at a distance x from infinitely long wire carrying current I. ठीक है? मतलब यहाँ पे डिस्टेंस x कौन सा? अब देखो, अब इज नॉट क्लियरली गिवन, so it depends on the question की x कहाँ से. For to be safe, I'll take it from the center. ठीक है? सेंटर ऑफ द लूप से लेकर वायर तक अगर डिस्टेंस x हो गया, ठीक है? So we'll try to go for this EMF induced in AD. Up for AD, like take any point on AD, will the magnetic field be same? For any point on AD, will the magnetic field be same? Yes, because it is at the equal distance from the wire, so magnetic field एक ही होगा, right? And AD का length कितना होगा? What will the length of AD from the infinitely long wire be? Infinitely long wire हो गया, AD ये हो गया. Distance from the infinitely long wire of AD क्या होगा? ये distance, दोनों के बीच में distance क्या होगा? How much will it be? It will be equal to x minus L by 2. Right? समझ आया ना? X minus L by 2. So at AD, first of all, at AD, I can consider that B is uniform. So what will the magnetic field be? क्या होगा? Because of infinitely long wire, mu naught I by 2 pi D. Right? D यहाँ पे कितना हो जाएगा? X minus L by 2. समझ आया ना सबको? मैग्नेटिक फील्ड मिल गया ना आपको? यस, ठीक है. नाउ ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? BLB. ठीक है, सिंपल. So mu naught, I'll just call it as BLB. So if I just substitute, उसके लिए क्या हो जाएगा? Mu naught I into उसका लेंथ क्या होगा? AD का लेंथ तो ब्रेड्थ हो जाएगा BV upon 2 pi into x minus L by 2. Clear? अब मुझे बताओ which end will be positive? देखो AD is going towards right, so which end will be positive here? Which end will be positive? Magnetic field कैसे हो गया यहाँ पे? Magnetic field is inverse. Magnetic field is inverse. So which end will be positive? D positive हो जाएगा and A negative हो जाएगा right hand thumb rule से. Yes, I think all of you got it right. देखो किसी को अगर कोई डाउट है तो get it clear. ठीक है? Now I'll do the same. जैसे AD किल हो गया, दूसरा कौन सा वायर बचा यहाँ पे? BC. ठीक है? I'll do it for BC. मुझे कोई बताओ for BC what will the length be?
और डिस्टेंस क्या होगा? Distance from the infinitely long wire will be x plus L by 2. Look at the diagram. क्या होगा? X plus L by 2. Right? So everything will be same except for this mu naught I B V upon 2 pi into x plus L by 2 आ जाएगा और कुछ नहीं. समझ में आया ना यहाँ तक? EMF induced for BC समझ में आया ना? Yes or no? Yes. EMF induced for AD for BC दोनों के लिए मिल गया. Even for BC कहा था BC कैसे था? अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया. एक मिनट, जस्ट ए मिनट. यहाँ पे ना AD उल्टा ड्रॉ किया मैंने. A ऊपर है एंड B D नीचे. ठीक है? That's how it is in the diagram. Biology diagram. ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. ठीक है? So if I do the same for BC, BC के लिए भी क्या हो जाएगा? ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव. यस. अब दोनों में EMF इंड्यूस सेम है क्या? In both of them, the EMF induced is different, so I'll call it as E1 and E2. Epsilon 1 and epsilon 2. Obviously, here in terms of magnitude, epsilon 1 is greater than epsilon 2. Right, so now I can say that the rectangular loop will become equal to this. ऐसे imagine कर सकता हूँ. Circuit can be imagined as this. Right? This A, B, C and D. This R represents total resistance of the circuit. ठीक है? ये हो गया E1, ये हो गया E2. So what will the net EMF be in this case? बताओ तो कोई. What will the net EMF be in this case? तो निकालना क्या था पहले? I think करंट निकालना होगा. Magnitude of EMF. ठीक है, कर लेंगे. Net EMF. प्रशांत ध्यान से सोचो एक बार. देखो, because of E1 करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, clockwise, right? Because of E2 कैसे होगा करंट का डायरेक्शन? उल्टा होगा ना E2 के वजह से, एंटी क्लॉकवाइज. यस, समझ आ रहा है ना? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. प्रशांत क्लियर? देखो, पैरेलल कनेक्शन अलग होगा, सीरीज कनेक्शन होगा. देखो यहाँ पे E1 and E2 are in series or in parallel? E1 and E2 are in series or in parallel? Series. ठीक है? So series में look at the direction of current. उनके वजह से direction of current होगा वो. ठीक है? If both of them, because of both of them, the direction of current is in the same sense, then add them. Opposite मतलब subtract. जैसे इस केस में क्या हो जाएगा? Net EMF will be equal to E1 minus E2. ठीक है? But if I go with this, तब पैरेलल में होंगे दोनों. ठीक है? Now they are in parallel, right? It's connected to anything else, something else. Because of E1 also current ऐसे ही होगा. Because of E2 also current ऐसे ही होगा. The same sense, clockwise sense. Then you will add. ठीक है? So parallel and series में you have to distinguish. Always look at the direction of current because of them. Same direction में है तो add कर लेना, opposite direction मतलब subtract. ठीक है? So that's the case here. Net EMF क्या हो जाएगा? It's E1 minus E2. समझ में आना यहाँ तक? Net EMF is equal to E1 minus E2. Subtract and you'll get the answer. कर लो, subtract कर लो. That's it. क्या होगा आंसर? Subtract and tell me the answer. This question also is in the DC band. Question nahi, I think the point hasn't mentioned. But similar question to है already.
ठीक है, आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर मैच नहीं हुआ मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि x जो लिया हमने वो उल्टा लिया होगा हमने, x का डिफरेंस हो सकता है. लेट मी वेरीफाई दैट. फर्स्ट थिंग इज दैट आ गया वो कौन सा क्वेश्चन था, या x उन्होंने अलग ले लिया. सो आई विल टेल द आंसर हियर. x उन्होंने सेंटर से लिया ना हमने x, they have taken the x as from the h. ठीक है, so that's in like lack of information मान लेना with respect to the question. It should have been mentioned obviously. ठीक है, so we'll just start to subtract this. when you subtract क्या मिलेगा आंसर आपको, net EMF क्या हो जाएगा दोनों का subtraction, mu naught I BV upon 2 pi the constant. then नीचे तो x square minus L square by 4 आ जाएगा. then ऊपर क्या आ जाएगा, x plus L by 2 and x minus L by 2 का डिफरेंस, तो L आ जाएगा, राइट. x कैंसिल होके L आ जाएगा. यस यही आएगा ना, राइट. दैट्स इट, देयर इज द आंसर. बाकी सिंपलीफिकेशन हो जाएगा बट देयर इज द आंसर. क्लियर, समझ आया ना सबको. सी अगेन द मेथड इज सिंपल. ठीक है, first of all you will take each and every segment of wire as different a b b c c d and ad, right. calculate EMF for individual wires. एक सर्किट बना दो उसका, जैसे यहाँ पे मैंने सर्किट बना दिया. then go for net EMF, you'll get the answer. ठीक है, उन्होंने कुछ पूछा, can't we go for BA. BA भी कर सकते हैं बट फ्लक्स का चेंज फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा ना. then in that case for it to find out flux you have to integrate. इसलिए we'll go with this is easier method. ठीक है, L ऊपर कैसे आ गया. ठीक है, we'll go with subtraction. subtraction क्या होगा, 1 by x minus L by 2 minus 1 upon x plus L by 2 का subtraction, right. so just go for the LCM. नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन x minus L by 2 into x plus L by 2, x square minus L square by 4. बट ऊपर क्या आएगा, this x plus L by 2 minus of x minus L by 2. देखो x minus x कैंसिल हो जाएगा, L by 2 minus of minus L by 2, L by 2 plus L by 2 क्या आ जाएगा, L आ जाएगा ना. यस, समझ में आया ना सबको. L upon x square minus L square by 4 आ जाएगा. तो बाकी सब तो वही है, mu naught I B V upon 2. Done, right? Simple one, okay. Not calculation part थोड़ा लंबा लग सकता है आपको, but that is also simple. Just have to be careful with things. ठीक है. Now this one. We'll go into the other question also then. अच्छा, I think we are out of time. Time खत्म हो गया. ठीक है. So what you'll do is for today 6.2 खत्म कर लो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट you can leave it as of now. We'll go into that. 6.2 खत्म कर लेना. Once that is done, we can go into module also. Module में भी क्वेश्चन आसानी होगा. ठीक है, level 1 and level 2 of module after that. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. So for today you have to complete 6.2 with examples also. And 2 hours में वो मतलब that's actually too much of time. 2 hours for 6.2 मतलब. ठीक है, काफी ज्यादा टाइम बचेगा for that. And if time is remaining, then you can go for the extra part. Module चालू कर देना. Point 1 of the module. Okay. तो ऐसे कुछ मत होना कि हाँ 6.2 हो गया मतलब खत्म. अरे हाँ हर्षा, I'll do it. Okay, I'll do it now. ठीक है, yeah. Okay, then I'll end the class. ठीक है, चलो then, bye.